Hello friend, how are you? Welcome to the Pan Study Center. We are going to do today is very important MCQ class 8 science chapter here light to be revise the concept in the syllabus and effectively and improve your chance to scoring of high marks in your board exam, and which will be very important for the exam point of view, and it will be important for the competitive exam also. Let's see what is the topic today. Today we discussion most important chapter here, light, class 8 CBSE NCERT science chapter here, light. The chapter is the most important for the all exam point of view, and there is important for the here MCQ. MCQ is important for here, and first MCQ arrive here. That's important. If the angle of incidence of light falling on a plane mirror is 30 degree, and what will be the angle of reflection? देखा जाए तो इस क्वेश्चन का ये महत्व होता है कि यदि समतल दर्पण पर पड़ने वाला प्रकाश का अपतन कोण 30 है और प्रवर्तन कोण क्या होगा? अगर अपतन कोण 30 है तो प्रवर्तन कोण क्या होगा? तो काफी महत्वपूर्ण है ये कि इंसिडेंट ऑफ लाइट ऑफ फॉलिंग ऑन द प्लेन मिरर इज 30 एंड व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. You know that's important. The incident of light falling and the angle of reflection, the both are the same. It means to the option here C. There is incident light of falling on the plane mirror is a 30. The angle of reflection is also 30. It means to the option C is correct here. Let's see next question here. The next question on your screen, question here. The image formed by a camera and a simple microscope are respectively here. एक कैमरे और एक साधारण माइक्रोस्कोप द्वारा बनाई गई छवि कैसी होगी? ए रियल एंड रियल, बी रियल एंड virtual, C virtual and virtuals, and D virtuals and real. You know that is the question is very important. The image formed by a camera and a simple microscope are here. You know that is the answer is very clear. Answer here real and virtual. This means to the B option is correct. B real and virtual. There is a camera and simple microscope. The image formed by real and virtual. It means to C option is correct. Let's see next question here. The next question on your screen, question here. The defect due to the which a person is not able to see the distant object clearly. यानी वह दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है. यानी आपको वो डिफेक्ट का नाम बताना है जिसके कारण व्यक्ति जो है दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाती हैं. और हमारा ऑप्शन है ए मायोपिया, बी हाइपरमेट्रोपिया, एंड सी कॉर्निया, एंड डी कैटरेक्ट. क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग. द डिफेक्ट ड्यू टू विच अ पर्सन इज नॉट एबल टू सी द distance object clearly. You know that is an important question here for the exam point of view, but answer is very clear. There is myopia. Myopia is a defect due to the which person do not able to see the distance object clearly. It means the A option is correct here, myopia. Let's see next question here. The next question on your screen,
Question here, the amount of light entering the eyes is controlled by. The amount of light entering the eyes is controlled by. यानी आंखों में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रण करता है? आंखों में जो प्रकाश आती है उसको कौन नियंत्रण करता है? ऑप्शन है ए आइस लेंस, बी कॉर्निया, सी एरिस, डी सिलेरी मसल. The question is very interesting here. The amount of light entering the eyes is controlled by. So it means to the here answer is Aries. Option C is correct for this question. Let's see next question here. Next question on your screen. Question here. What is the angle of incidence of ray if the reflected ray is at an angle of 90 degree to the incident ray? यदि क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन है परावर्तित किरण अपरावर्तित किरण से 90 के कोण पर है, तो किरण का आयतन कोण क्या होगा? यानी जो परावर्तित किरण है अगर वो अपवर्तित किरण के लिए 90 डिग्री कोण बनाता है तो किरण का आपतन कोण कितना होगा? क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है और इसका ऑप्शन है ए 60 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 90 डिग्री, डी 180 डिग्री. You know that question is very clear. What is the angle of incident of ray if the reflected ray is at an angle of 90 degree to the incident ray? There is an important incident ray, there is an angle of ray, reflected angle. There is the incidence ray of the reflected, there is half of the incident ray. Half of the incident ray, there is a reflected ray. It means to option is B is correct. Option B 45. There is incident ray of the 90 degree. This is important. And the reflected angle of incident of ray of the reflected of this here of 45. It means to incident ray of 45. B option is correct for this question. Let's see next question here. Next question on your screen. Question here. When we stand in the front of our dressing table, when we stand in the front of our dressing table, our left hand seem to be right hand and right seem to the left. This called. यानी जब हम अपनी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होते हैं, जब आप अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होते हो तो आपका जो है बायां हाथ दाहिनी और दाहिनी हाथ बायां की तरफ होता है. तो आखिर ऐसा क्यों होता है? किस कारण होता है? ऑप्शन है ए लेफ्ट राइट कन्वेंशन, बी लेटरल इन्वर्शन, सी अपसाइड डाउन फिनोमेनन, and D mirage. You know that question is very interesting. What we stand the front of our dressing table, our left hand seem to be right and right seem to be left. This called to here lateral inversion. It means the B option is correct here. Lateral inversion, B option is correct for this question. Let's see next question here. The next question on your screen. Question here. A smooth shining surface. A smooth shining surface which rebound the light back in a same or different direction is called. A smooth shining surface which rebound the light back in the same of different direction is called. यानी एक चिकनी चमकदार सतह जो प्रकाश को वापस उसी या
अलग दिशा में लौटा देती है, उसे हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए अगर सूरज के सामने आप खड़े रहते हैं और आपके हाथ में एक ऑब्जेक्ट है जिसमें सूरज की रोशनी पड़ते ही जो रोशनी है दूसरे साइड चली जाती है, तो आपके हाथ में क्या है? क्या ऑप्शन ए मिरर है, बी ए लेंस, सी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड डी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट? क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग. A smooth shining surface which rebound the light back in a same or different direction is called mirror. A mirror, A option is correct for this question. Let's see next question here. The next question on your screen, question here, in our eye, dash shell can seen a color. In our eye, dash cells can seen a color. Question is very easy. हमारे आँखों में डैश कोशिकाएं रंग समझा सकती है, यानी हमारे आँख में एक कोशिका है जो हमारे आँखों में रंगीन जो है करती है, यानी हमारे आँख में एक डैश है, एक डैश कोशिका है जो हमें रंगों को समझाती है. वो कौन सा जो है कोशिका है? ए रॉड, बी कोन, सी बोथ रॉड एंड कोन, एंड डी नेदर रॉड nor a cone. Question is very interesting and important for the exam point of view. In our eyes, dash cells can be seen a color. You know that the answer here B, cone. In our eyes, cone cell can be seen a color. Cone cells can be seen a color. The C option is correct for this question. Let's see next question here. Next question on your screen. Question here. Which of the following is not a luminous object? Which of the following is not a luminous object? यानी देखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी एक चमकदार वस्तु नहीं है? यानी साफ तौर पे इसको बताया जाए और साफ तौर पे मैं बताऊं तो इनमें से कौन सा वस्तु जो है जिनका अपना प्रकाश नहीं होता है, यानी जो चमकदार वस्तु नहीं है. तो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत दिलचस्प है. देखा जाए तो ऑप्शन है ए सन, बी कैंडल, सी मून, डी ट्यूबलाइट. क्वेश्चन अंडरस्टैंड which of the following is not a luminous object? You know that sun is a oval light. It means the sun is a luminous object. B candle, burn the candle, there is a react by the luminous object. And C moon. C moon is a lighting here, but it is not a luminous object. It means the C option is correct. Option C is correct. The moon is not a luminous object. C option is correct. Let's see next question here. Next question on your screen. Question here. Light passing through a prism. Light passing through a prism is split into the 7 color, and this is called, यानी देखा जाए तो प्रिज्म से गुजरने वाला प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो सकता है. तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रिज्म जो होता है त्रिकोण आकार का होता है. जब उसमें से हम वाइट लाइट जो है पास कराएंगे तो हमें 7 रंगों में विभाजित होता हुआ नजर आएगा. तो इस परिघटना को हम क्या कहते हैं? The light passing through a prism split into 7 color and is called dispersions, B dissolution, C division, and D none of the above. Question is very interesting for the exam point of view.
but answer is a clear dispersion. A dispersion. A dispersion is the reaction. There is a light pass through the prism split into the 7 color. It means this persons. That's important here. And let's see next question here. Next question on your screen. Question here. Rainbow is a natural phenomenon showing. इंद्रधनुष एक प्राकृतिक घटना है. जब बरसात होती है और बरसात के बाद आप आकाश में आसमान में इंद्रधनुष देखते हो, तो आखिर ये इंद्रधनुष किस परिघटना को शो करता है? तो क्वेश्चन हमारा यही है और ऑप्शन है ए रिफ्लेक्शन, बी डिफ्लेक्शन, सी dispersion, and D diversion. Question is very interesting. After the rain, the sun is coming. There is a light, is a spirit. There is a rainbow, is a formation. And why the rainbow is a formation? And right there, a natural phenomenon is showing here. You know that the question is very interesting. Or answer is also interesting. Rainbow is a natural phenomenon. And there is a make a reflection. Reflection is the light here. There is a rainbows here are showing opposite of sun. And this phenomenon is called reflection. It means the A option is correct here. Reflection. And the let's see next question here. Next question on your screen. Question here. To make a kaleidoscope, we require. To make a kaleidoscope, we require. यदि हम बहुरूपक दर्शक बनाने के लिए हमें आवश्यक किन चीज़ों की होगी? बहुरूपक दर्शक यानी एक मिरर में आप कई रूप देख सकते हो. तो इसके बनाने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होगी? और हमारा ऑप्शन है ए 3 प्लान मिरर, बी 4 प्लान मिरर, सी 3 ग्लास सीट, D 4 glass seat. Question is very interesting. To make a kaleidoscope, we require. That's important here. But answer is clear. A 3 plan mirror. A 3 plan mirror. To make a kaleidoscope, we required a 3 plan mirror. A option is correct for this question. Let's see next question here. Next question on your screen. Question here. A beam of light striking there reflecting surface is called. प्रवर्तक सतह से टकराने वाली प्रकाश की किरण को हम क्या कहते हैं? यानी जो प्रवर्तित प्रकाश होती है, अगर वो किसी चीज़ से टकराती है, तो जिस माध्यम से टकराती है और टकराने वाली प्रकाश को हम क्या कहते हैं? जो सतह पर टकराती है, प्रवर्तक सतह पर, यानी किसी सतह पर टकराती है और वहाँ से वो परिवर्तित हो जाती है. तो इस परिघटना को हम क्या नाम देते हैं और इसे हम कहते क्या हैं? जैसे आप एक मिरर लीजिए, सन में खड़ा होइए और सन में जब प्रकाश इस पे आपके मिरर पे पड़ेगा तो वो दूसरे साइड चला जाएगा. तो इस परिघटना को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए. ए रिफ्लेक्टिंग रे, बी इंसिडेंट रे, सी रिफ्रैक्टेड रे, डी नॉर्मल रे. क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग. द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग देयर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड. You know that the reflected ray is nothing. Here is the correct answer. And B, incident ray. Yes, it is the correct answer. Incident ray. Incident is a reflecting surface is called the incident ray. The beam light striking the reflecting surface is called incident ray. B option is correct for this question. Next question on your screen. Question here. A band of 7 color is called. A band of 7 color is called.
7 रंगों की पट्टी को हम क्या कहते हैं? जो रेनबो दिखती है, जो रेनबो बनती है, उसको एक्चुअली हम क्या नाम देते हैं? हमारा ऑप्शन जो है, पहला है ए विबगोर, बी स्पेक्ट्रम, सी डिस्पर्शन, डी रिफ्लेक्शन. The many student thought A answer is correct, but not a option is correct here. You thought V, I, B, G, Y, O, R. There are 7 colors represent here, but this answer is not a correct here. Question here: band of 7 color is called. The band of 7 color is called a spectrum. The spectrum, this B option is correct here. A spectrum, not a bib glow. Okay, the B option is a spectrum is correct. Let's see next question here. The next question on your screen, question here: front Belgate part of the ice ball is called. The front Belgate part of the ice ball is called. यानी नेत्र गोलक का अग्रभाग जो मुड़ा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं? देखिए, नेत्र में गोलक है, उसका अग्रभाग जो होती है वो थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है. आंखों में जब देखोगे आप तो जो नेत्र गोलक होता है वो हल्की सी मुड़ी होती है, और उस भाग को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए कॉर्निया, बी क्रोएट, C pupil, D retina. Question is very interesting. The front bagel part of the ice ball is called. You know that answer here, cornea. A is correct. Option A, cornea. A is correct. Let's see next question here. The next question on your screen, question here: which one of the following statement is correct regarding rods and cones in the human eyes? Question is very clear. मानव आंख में रॉड और कोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी देखा जाए तो रॉड और कोन के अंतर्गत कौन सी बात सही है? और ऑप्शन है हमारे समक्ष: ए कोन्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, बी कोन्स आर सेंसिटिव टू द ब्राइट लाइट, एंड सी rods are sensitive to the bright light, and D rods can sense a color. You know that question stand? Question is clear. Which one of the following statement is correct regarding the rod and cones in the human eyes? What is the functions the rod and the cone? Simply here, you know that the cones are sensitive to bright light. It means to here B option is correct. There is the statement is correct here. Rod and cones, their cones are sensitive to the bright light. The B option is correct for this question. Let's see next question here. Next question on your screen. Question here: in case of reflection of light, the angle of incidence I and the angle of reflection R are they related as? It means to the relation of incidence and reflection light. The question is very interesting. प्रकाश के प्रवर्तन के मामले में आपतन कोण I है और प्रवर्तन कोण R है, तो इस प्रकार इन दोनों में क्या संबंध है?
आई यानी प्रवर्तन कौन है, प्रवर्तन कौन से किस प्रकार से संबंधित है, हमारा ये क्वेश्चन है। और ऑप्शन यहाँ बता रहा है कि ए आई इज इक्वल टू आर, बी आई इज स्मॉलर टू आर, एंड सी आई bigger to R, and D non-defined relation. You know that question is very clear. Our answer is here. The relation between two I R is equal to. It means to the I is equal to R. Option A is correct. The incident equal to reflection. There is relation here. I is equal to R. Both are same. It means to the A option is correct. Let's see next question here. Next question on your screen. Question here. Name the types of mirror used as a black view mirror. Name the types of mirror used as a black view of mirror. Black view दर्पण के रूप में उपयोग किए जाने वाले दर्पण का नाम बताइए। बैक व्यू, बैक व्यू, तो बैक व्यू यानी पिछला, पीछे की चीज देखने के लिए हमें किस प्रकार के दर्पण की जरूरत पड़ती है, और ये चीजें होती हैं आपके गाड़ियों में लगी हुई। तो गाड़ियों में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है बैक व्यू देखने के लिए, जो है किस दर्पण का उपयोग करती हैं। ऑप्शन है ए प्लान मिरर, बी कॉनकेव मिरर, सी कन्वेक्स मिरर, एंड डी एनी ऑफ दिस। क्वेश्चन इज वेरी क्लियर। नेम द टाइप्स ऑफ मिरर यूज एज अ बैक व्यू मिरर। द बैक व्यू मिरर, द आंसर इज हियर convex mirror. There is a use of many types of vehicle. There is a use of convex mirror. Convex mirror is a clear view of the back view of mirror. That's meant to the C option is correct for this question. The C convex mirror. And let's see next question here. Next question on your screen. A question here. Visually impaired people can read and write using. Visually impaired people can read and write using. दृष्टिबाधित लोग इसका उपयोग करके पढ़ और लिख सकते हैं। दृष्टिबाधित का मतलब होता है जो अंधे लोग होते हैं, किस चीज का उपयोग करके वो पढ़ और लिख सकते हैं। आपको मैं बता दूं, जो अंधे लोग होते हैं वो भी पढ़ना लिखना जानते हैं, और उनके लिए स्पेशल एक इंस्ट्रूमेंट होता है। तो एग्जामिनर ने आपसे वही इंस्ट्रूमेंट का नाम पूछ लिया है कि जो अंधे लोग होते हैं किसका उपयोग करके वो पढ़ और लिख सकते हैं। हमारा ऑप्शन है ए इलेक्ट्रॉनिक राइटर, बी डिजिटल पेन्स, सी वेरल सिस्टम, डी हेयरिंग एडिट। Note that this question is very interesting and important for the exam point of view. Question here. Visually impaired people can read and write using of. The answer is here a well system. Not electronics writer, not a digital pen, not a D hearing aid. There is a use of well system. The C option is correct for this question. C, well system. And let's see next question here. Next question on your screen. Question here. The splitting of white light into its 7 constituent of color is called. श्वेत प्रकाश उसके 7 रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है। आपको पता होगा कि जब प्रिज्म से हम वाइट प्रकाश यानी सफ़ेद प्रकाश गुजारेंगे तो हमें 7 कलर प्राप्त होता है। तो इस परिघटना को और जो विभाजित करती है, रंगों को जो विभाजन करता है,
वाइट लाइट से जो है 7 रंगों में, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए रिफ्रैक्शन, बी डिस्पर्शन, सी डिविएशन, डी रिफ्लेक्शन. Question is very interesting. The splitting of white light into its 7 constituent color is called. There is the most important question here. The options B is correct. Dispersion. There is the splitting of white light into the 7 constituent color is called dispersion. B option is correct for this question. B dispersion. Okay, let's see next question here. Next question on your screen. Question here. Myopia can be corrected by using a. Myopia can be corrected by using a. निकट दृष्टि दोष को किसके प्रयोग से ठीक किया जा सकता है? निकट दृष्टि दोष यानी दूर रखी वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, तो निकट दृष्टि दोष के लिए हम किस प्रकार के लेंस उपयोग करेंगे जो इससे हम छुटकारा पा सके, यानी इस तरह की बीमारी से छुटकारा हम पा सके? ऑप्शन है ए कॉनकेव लेंस, बी कन्वेक्स लेंस, सी ऑप्टिक लेंस, डी मैक्रो लेंस. You know that the question is very clear and important. The myopia can be correctly by using a concave lens. A option is correct here. A concave lens. A option is correct for this question. Let's see next question here. Next question on your screen. Question here. The light enter the eyes through. The light enter to the eyes through. प्रकाश आंख के माध्यम से प्रवेश करते हैं, यानी प्रकाश जो है आंख में किसके माध्यम से प्रवेश करती हैं? आंख में आप प्रकाश पड़ता है तभी आप देखते हो, लेकिन आंख में प्रकाश किसके माध्यम से आता है? तो ऑप्शन यहां पर है ए आइस लेंस, बी प्यूपिल, सी कॉर्निया, डी रेटिना. The question is very interesting. The light entered the eyes through cornea. Option is C. Cornea. C option is correct. The cornea is light entered through here. Cornea. There is the C option is correct for this question. Let's see next question here. The next question on your screen. Question here. In the retina of the eye, the area having no sensory cell is called. No sensory cell is called. आँख के रेटिना में संवेदी कोशिकाओं से रहित क्षेत्र कौन होता है? यानी आँख में के रेटिना में एक ऐसा क्षेत्र होता है जो संवेदनशील नहीं होती है, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? संवेदनशील का मतलब होता है जो छुएओगे भी तो वो सूज जाएगा, ये खराब हो जाएगा. आँख में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो संवेदनशील रहित है, यानी संवेदनशील नहीं है? ऑप्शन है आइरिस, ब्लाइंड पॉइंट, कॉर्निया, डक स्पॉट. The question is very interesting. In the retina of the eye, the area having no sensory cell is called. It's called option here blind spot. That's important here. The B blind spot. B option is correct for this question. That's important here. And let's see next question here. Next question on your screen. Question here. If light fall perpendicular on a plane mirror, what will be the angle in which it will be reflected?
क्वेश्चन इज वेरी क्लियर। यदि प्रकाश समतल दर्पण पर लंबवत गिरता है तो वह किस कोण में परिवर्तित होगा। मान लीजिए अगर आपके पास समतल दर्पण होता है और समतल दर्पण पे अगर प्रकाश जो है लंबवत पड़ेगा तो प्रकाश में क्या चेंजेस दिखाई देने देगा हमें। ठीक है, बहुत क्वेश्चन स्पष्ट है और बहुत आसान है। इफ लाइट फॉल अ परपेंडिकुलर ऑन अ प्लेन मिरर, what will be the angle in which it is be or reflected? You know that is question is very clear or answer is very clear. A plane mirror, the light of here or angle is made of 180. It means to C option is correct. The answer 180 is correct for this question. And let's see next question here. The next question on your screen, question here, an owl can be seen clearly at a night but not at daytime because it has. Owl can see clearly at a night but not at daytime because it has. उल्लू रात में तो साफ देख सकता है लेकिन दिन में नहीं देखता। ऐसा क्यों होता है? आपने उल्लू देखा होगा, उसको रात्रिचर एनिमल कहते हैं। वो क्योंकि रातों में ही देख पाता है, दिन में नहीं देख पाता है। तो आखिर उल्लू जो है रात में क्यों नहीं देख पाता है? उसमें क्या चीज़ है जो वो नहीं देख पाता है? क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। शायद आपको पहली बार जानने को मौका मिला है कि उल्लू जो है किस कारण से जो है दिन में नहीं देख पाता है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर है ए, मोर रॉड्स एंड फ्यू कोन्स, बी, लेस रॉड एंड मोर cones, C, more rod and more cone, D, less rod and less cone. Question is very interesting. An owl can see clearly at a night but not at daytime because it has a more rods and few cone. That is the right answer. A is correct. More rods and few cones. It means the A option is correct here. And total question is most important for the exam point of view and also here or competitive exam. That's important here. This topic was till this. We will be do there are next topic in the next part. If you like it, then please like, share, subscribe and share the video as a much as a possible. Do not think, subscribe and save in your mobile. Thank you.